Hello friends, welcome back to another episode of Movies and Melodies. We're in May now and looking forward to summer, I hope. Today's episode is an Indian movie staple, the piano song. Specifically, piano songs that have been picturized on either the male lead or someone male in the movie. There are plenty of these, and for the first song, I take you all the way back to 1949 to Andaz. There's a song, a piano song picturized on Dilip Kumar, sung by Mukesh ji. This movie was sort of a regressive statement on how the modern woman gets too friendly with a man who is not her husband and how this can cause misunderstandings. Frankly, in my opinion, the men involved in this movie are just such a pair of immature, kind of stupid men. Nargis and Raj Kapoor play the married couple, and Dilip Kumar, he plays the role of the childhood friend who misunderstands her friendly nature and the kind of love that she has for him. So essentially, no platonic relationships between a man and a woman. That's what the movie says. The music for the movie was by Naushad Saab, and Majroo Saab has written all the lyrics. Hum aaj kahin dil kho baithe. हम आज कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं यूं समझो किसी के हो बैठे यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं हर दम जो कोई पास आने लगा हर दम जो कोई भेदुल्फत के समझाने लगा भेदुल्फत के नजरों से नजर का टकराना नजरों से नजर का टकराना था दिल के लिए एक अफसाना था दिल के लिए एक अफसाना हम हाथों को दिल से धो बैठे यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं आँखों में समाया कोई मगर कौन आया किसी को क्या ये खबर आँखों में समाया कोई मगर कौन आया किसी को क्या ये खबर पूछो तो यही उसका पता हो पूछो तो यही है उसका पता चंचल नैना और शोख अदा चंचल नैना और शोख अदा हम दिल की नैया डुबो बैठे यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं Kathputli, this movie came out in 1957. It had Balraj Sahani, Vaijayantimala as the main leads with this young actor Jawahar Kaul who acted as her husband in the movie. It's a very interesting movie. I enjoyed it a lot actually. The story is about a young dancer. This young girl, she falls in love with and marries this puppeteer. Her life then takes a very dramatic turn because her husband gets injured and he's unable to work.
So she has to support the family. She becomes a dancer, a very famous dancer, and acts in movies and so on. And she is helped along in this quest by Balraj Sahani, who plays a theatre manager. The theatre manager is also actually in love with this young girl, but he's silent about it and just, out of the kindness of his heart, helps her. The husband, however, as is the case of all movie husbands, misunderstands, and then there is the requisite conflict and tension, and then the movie goes on. The movie is a treat, honestly, because Vaijayanthimala has a huge role in it, in the sense of a lot of songs and a lot of scenes that bring her dancing to the forefront. And she was a phenomenal dancer, so light on her feet, so graceful, so expressive, that this movie ends up being a lovely treat for viewers. So I encourage you all highly to go watch this movie. The song that I want to talk about is picturized on Balraj Sahani. The scene is sort of like a rehearsal for some kind of a theatre production that they're putting up. So he's playing the piano, singing the song, and she's sort of in the side dancing and listening to him and so on. Subir Sen has sung the song for Balraj Sahani. It's very Hemant Kumar-esque voice. And Shankar Jaikishan's music, Hasrat Jaipuri, Shailendra ji sharing the lyrical honors. Shailendra ji for this particular song, Manzil wahi hai pyar ki, rahi badal gaye. मंजिल वही है प्यार की राही बदल गए मंजिल वही है प्यार की राही बदल गए सपनों की महफिल में हम तुम नए सपनों की महफिल में हम तुम नए मंजिल वही है प्यार की राही बदल गए मंजिल वही है प्यार की राही बदल गए नजरों से दूर दुनिया की नजरों से दूर जाते हैं हम तुम जहां उस देश की चांदनी गाएगी ये दास्तां मौसम था वो बहार का दिल थे मचल गए सपनों की महफिल में हम तुम नए मंजिल वही है प्यार की राही बदल गए Teen Deviyan, starring Devanand, Nanda in the main leads, with Kalpana and Simi Garewal as additional women in the movie. It came out late 50s, I want to say. And again, an interesting movie. I think I've discussed this before. Devanand is this young man who's basically a commitment phobe, and there are 3 women who all want to marry him, and he needs to make a commitment to one of them. The movie is very interesting. Music is awesome. S.D. Burman Majroo Saab. So, what's not to like. This particular song, picturized on Devanand, it's a party situation, and there are all these adoring fans looking on. And Kishore Kumar's wonderful voice sings for Devanand here. ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ ओ देर से कितनी दूर
हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। आप हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। Devar, which I think it was sometime in the 60s it came out. This movie was a Tamil movie remake. Story of two cousins who are very, very close to each other, but in the end, you know, as they grow older and at the time of their marriage comes around, there's this huge betrayal and their friendship turns into a very bitter enmity. Dharmendra and Sharmila Tagore are sort of the focus of the movie, with Devan Verma and Shashikala as the alternate or parallel leads. Devan Verma has done such a phenomenal job in this movie. It's worth watching basically for him. The movie was a big hit, music was a big hit, Roshan Saab's music and Anand Bakshi's lyrics. This particular song, Dharmendra sings it, and again it's some kind of a celebration, party-ish kind of situation, and he is singing a very bitter song essentially, but it's a very pretty tune. The lyrics are very nice. Mukesh ji's voice. आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा ज़माना बचपन का. आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा ज़माना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले, वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले, हम आज तलक भी ना भूले, हम आज तलक भी ना भूले, वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये प्यार भुलाना
बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। Bahare Fir Bhi Aayenge was Gurudutt ji's last movie as a producer. In fact, he's credited posthumously actually for this movie. He died after having shot part of it. They reshot all of that again when they hired Dharmendra to replace him for the movie. The movie was, it was good. You know, I don't know how much of it was essentially Gurudutt ji's vision. Who can tell? Music was good. O.P. Nayyar ji's music with a lot of writers actually. You had Kaifi Azmi, Shevan Rizvi, S.H. Bihari, and this particular song was written by Anjan Saab. And Mala Sinha, Tanuja are the two women who, you know, there's again love triangle, misunderstanding kind of a thing. Rahman Saab, Devan Verma, all these people round off actually a very stellar cast. And the music was really, some of the songs were, I know, average, but some very beautiful songs. This particular one, Dharmendra on the piano, singing to, essentially he's singing to Tanuja, but Mala Sinha misunderstands. Rafi Saab's absolutely gorgeous voice. Aapke haseen rukh pe aaj naya noor hai. आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है. Brahmachari came out in 1968. Shami Kapoor, Rajashri in the lead, supported by Pran and Mumtaz. The movie was great fun, also a big hit, and very involved. It was a rom-com, a lot of kids in it, and great music. Shankar Jaikishan, Hasrat Jaipuri, Shailendra, usual Shami Kapoor favorites. And this particular song is a very angsty song sung by Shami Kapoor in this restaurant. Rajashri and Pran are supposedly having dinner or some such. And Shami is on the piano singing this sad song in a very angsty way. Rafi Saab, of course, singing for him. Dil ke jharoke mein tujhko bithakar. दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास. दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास. महक मेरे सांसों में होगी, कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी. फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी. दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं. That's it for today, folks. Please do chime in with your feedback, your favorite piano songs, ideas that you want for me to present in the future, all of these things. I'll be back in 2 weeks, but until then, remember, music is food for the soul. Keep listening.